So it was one more element for the audience to connect. आपने हमने स्टोरी को जस्टिस किया है, कैरेक्टर को किया है, आपको ना आप जितने एलिमेंट ढूंढते कि ऑडियंस और रिलेट कर सके, तो सॉन्ग हमको एक और रीजन लगा। ऑब्वियसली म्यूजिक है, लाइक पॉपुलर सॉन्ग। अगर आप सारेगामा जैसे प्रोड्यूसर है आपके पास, आप म्यूजिक में यूज नहीं करो तो फायदा क्यों? The action can look bigger and larger because of CG and there's safety. आवारा पागल दीवाना में जो सारा कैरेक्टर था, एक इंसिडेंट था, मैंने आई गेस 15-17 इयर्स हो गए आए थे, तब से अभी तक मैंने शायद 100 टाइम्स ये किया होगा। क्या करता है, एक सीन था, वो मिल्क लेकर आती है और पहले कहते हैं पहले तू पी, मेरे पास जो भी कहीं आता है ना, पता नहीं नेचुरली निकलता है पहले तू पी। बहुत बार किया है मैंने ये। हॉट लुकिंग फादर और सीनियर रोमांसिंग वैसे फिल्में आ रहे थे, एंड आई वाज नॉट इनटू दैट काइंड, आई डिडंट वांट टू डू दैट काइंड ऑफ cinema because I didn't want that kind of an image. I still wanted to do something because your heroes have been Clint Eastwood, Robert Redford, Charles Bronson, so you know, elderly guys. They have the age, they have the wrinkles, but still have that swag. Hello everyone. Hello. Hi. Look at the energy. Suddenly jag gaye. So much excitement that we have regarding the show. And tell me first thing that how excited you people are, because trailer launch पे जितना जो whistling and everything was happening over there, how pumped up you guys are? Tell me. I think आपको देख के समझ में आ जाएगा। अभी तो उस दिन whistling से आपको समझ में आ जाएगा हमारी एनर्जी किस लेवल पे है। मतलब अन्ना के पूरे फैन पूरा पलटन है वहाँ पे, मतलब। No, it's exciting क्योंकि response अच्छा है, खास करके when you read reviews and when you see YouTube or reactions not only of men. I'm seeing on my timeline women reacting, talking about action, talking about exciting lag raha hai, we like the space that is in music, dekho, grunge, the old classics in a grunge format, in the rock version. Absolutely. तो मजाक किसी चीज़ का नहीं हुआ है कि ये नहीं कि हमने रीमिक्स करके गाने डाल दिए और लोग ये बोल रहे कि यार पुराने गाने को तो तुमने ख़त्म कर दिया, लेकिन with the situation, जीना यहाँ मरना यहाँ, उसके सिवा जाना कहाँ, अगर दम मारो दम है तो it's in the right place, giving that energy. तो overall एक positive feel है, we're just praying that people like it and appreciate करें. Absolutely. I'll talk about it a little later, but before that I want to know that when it comes to the way the narrative has been designed also, and there comes the directors, right? मैं समझ सकती हूँ कि there is a lot of value of nostalgia along with the fact that we have grown up watching him, and one thing I must say that at the age of 60 I want to be fit like you. Absolutely, yeah. We all feel the same. No? Yeah. So but where did this idea came from to include these songs at the along with the narrative? Whose idea was that and how you guys brainstorm about it? Songs का idea तो of course सर की तरफ से आया था कि let's use सारेगामा songs, and फिर हमने try किया उसको, and अच्छा. So, situation basically like songs are like we have Saregama owns classic songs, सब इतने hit रहे हैं, so it was one more element for the audience to connect. आपने हमने स्टोरी को जस्टिस किया है, कैरेक्टर को किया है, आपको ना आप जितने एलिमेंट ढूंढते कि ऑडियंस और रिलेट कर सके, तो सॉन्ग हमको एक और रीजन लगा। ऑब्वियसली म्यूजिक है, लाइक पॉपुलर सॉन्ग्स। अगर आप सारेगामा जैसे प्रोड्यूसर है आपके पास, आप म्यूजिक यूज नहीं करो तो फायदा क्यों है? कैश के लिए थोड़ी हम सारेगामा के पास ही गए थे, सारेगामा के पास अक्ल भी है, they've got great writers, they've got a phenomenal team. Sid is there, Alok, Prince, all a part of the Saregama team, Sahil, they contribute a hell of a lot. ऐसे बैठ के पैसे देने वाले प्रोड्यूसर्स नहीं है। विक्रम है, तो विक्रम को हमने आर्म ट्विस्ट करके सारे गाने ले लिए विक्रम से और कहा कि आप ही की है, तो बोला हाँ ले लो, लेकिन ये म्यूजिक है, ये योडली है, बोला वो फोडली योडली मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को गाने चाहिए, वो आपस में आप लोग निपटा लो, मुझे गाने चाहिए। सो देन इट वर्कड, एंड सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यूज़ किया हुआ, एंड everybody is appreciating it. Plus देखिए I see OTT now is लोग OTT चेप के दे रहे हैं,
टेलीविजन प्लस को OTT बोल के बेचा जा रहा है सडनली, इसलिए वो डर है कि यार OTT भी सोच समझ के ले रहे हैं, फिल्में हो या कुछ भी हो, नहीं हमको दिखाओ, रिलीज करो। वो टाइम गया कि people were just consuming content क्योंकि लोग अभी काम भी कर रहे हैं, so there is a filtering of the content is also happening. तो okay, why would it appeal to kids? Why would it appeal to teenagers? Why would it appeal to, you know, the mid-30s, 40s? Why would it appeal to the 60 plus? Right. It'll appeal to the 60 plus because of the music. You know, the music के वजह से देखो. So there's one more reason to watch the film, and that's what's happening. You know, even my mother's saying, "What beautiful songs," you know. So it works. Absolutely, absolutely. You know, but एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूँगी because we are talking about action and this is an action thriller. You are one of those actors who started working at a time when this precautionary measure and all these things were kind of almost myth maybe. Yeah, absolutely, absolutely. क्योंकि अजय देवगन कुछ दिन पहले, you know, भोला के promotion के time पे he was also talking about it. How do you look at that? Because you know both the times, you know, you have lived through both the times. Yeah, so I'm happy for the kids of today. I'm happy for the actors of today that they have precaution. The action can look bigger and larger because of CG, and there's safety. We risk our life constantly. Every second day we risk ourselves to injury. We risk our fighters to that. We probably not as much as, you know, the fighters did. And that's why we lost a lot of boys to injury and everything else. But today, thank God, all that has been eliminated. Even the fighters have all the precautions that there is, including equipment. We didn't have safety, basic equipment. You know, हम तो ऐसे ही वो क्या था, स्पॉन्ज जैसे लगा के करते थे, ऊपर से कूदते थे तो बियर बॉक्सेस पे कूदते थे, एयरबैग्स नहीं थे, कुछ नहीं था, और विंड फैक्टर चेक करना, हाँ वो जाओ कूदो, मास्टर जी का आशीर्वाद लो और कूद जाओ. that was action, but we've survived that. We're seeing this today. That's where we're enjoying the benefits. And for someone like me, even at this age, I'm able to do the kind of action that I can do because equipment has changed, camera has changed. You know, you get into you to get more intensity. पहले तो दूर से सर एक और करे आगे आते कैमरा लेके आ रहा है. हाँ, but things has changed now, so it looks better, and the idea is to make you look better when you're an actor. So absolutely, absolutely. What is the biggest challenge to direct a legend like him? To be loyal to the project. Consistency, and you know what we promised, like when we sent a script to sir, हमने हमारे दिमाग में जो प्रोजेक्ट के लिए जो था, हमने सर को भी अच्छा लगा, तभी सर ने हाँ बोला इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड हमारे लिए ये था कि हम वो चीज़ मेंटेन रखें, you know, being respectful to him. You have to be consistent to the project, the story, the character, everything. मतलब अच्छा प्रोजेक्ट बना के आओ. सर के साथ during the shoot also, जैसे होता है ना, आप एंड मोमेंट पे कुछ चीज़ें बेटर करने के लिए चेंज करते हैं, तो जब भी डिस्कस करते थे तो वी यूज्ड टू फील कि यू नो कभी बिकॉज सर सुपरस्टार है, कभी ऐसा ना डिसरिस्पेक्टफुल ना हो जाए या उनको बुरा ना लग जाए, बट ही यूज्ड टू ऑलवेज से वन थिंग कि यू कैन डू एनीथिंग, बट मेक श्योर इट हैज़ टू बी बेटर, इट हैज़ टू बी गुड फॉर द प्रोजेक्ट. तो आई थिंक वी ट्राइड डूइंग दैट, एंड सर का सपोर्ट बहुत रहा है उसमें. And I think I surrendered myself because गलतियाँ मैंने इतनी की थी. So you're handing yourself over to young directors, you know, as long as your script is right, you know, your script is right. वो homework हम कर चुके थे वैन में, हर सुबह बैठ के स्क्रिप्ट को, सीन को समझना, क्या माहौल होना चाहिए, क्या मूड होना चाहिए, कैसे, how should it end, what do you expect from the character. Once you got out of the van, they were the captains of the ship, and I used to just go quietly, do my bit with maximum intensity and come back and see whether they liked it. If they didn't like it, they wanted one more. Did they want a variation, then do it one more. But I think Vikram was in my blood. Wow. You know, when I did it. You embodied the character that well. Absolutely, and I was very clear that I am getting an opportunity to do action. I have to send the message out to the world that action is back. You know, and this is what raw action is, and this is what a tight budget also can still deliver if you are focused, and this is what is required for us to
at least get the audience to say, यार कुछ कोशिश किया है इन लोगों ने, you know. Success failure तो बात की बात है, they might rubbish this out on the 23rd, लेकिन कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो अच्छी हुई है, you know. एक पॉजिटिव नोट पे हम शुरू किए हैं. आर्टिस्ट अच्छे हैं, सिंसियर थे, सब स्टूडेंट्स के जैसे थे. वी वर ऑल फोकस्ड. अच्छा व्हाट, अच्छा रिएक्शन, या दिस सिचुएशन. उसके बाद ये होता है. सी, when it's web, you have to think of episode 8, you have to think of what happened in episode 2. Continuity of that. Yes, the character, because you're layering. So when you unlayer, you shouldn't get messed up. And watching so much OTT, thanks to the pandemic, you learnt all that. What is the excitement in the beginning? How will the titles come in? So they were very clear with all that. All we had to do is go act, deliver 100%, come back. Absolutely. You know, I want to know this, and this is something, a little this thing, right? When you guys were young, right? Which one was your favorite film of Sirs? One thing. And कभी सोचा था कि कभी ऐसा दिन आएगा that you guys are going to be filmmaker and going to direct this legendary actor? एक्चुअली कभी सोचा पहले तो सर की कोई एक नाम नहीं ले सकते, बहुत सारे नाम है. बॉर्डर और ऊपर से एज के हिसाब से ना, like when I was a Farrix, like I was Farrix baby, yeah. True. Sorry, I'm not. No, but it's true. Farrix baby only you call babies. That time, मेरा दो बाप, मेरा. Then I used to do, and then I'm like, I also had feeling for, Dharkan mein, like that time also had a feeling for him. Right. So those things were so sweet. But I want to know about you guys. What was your favorite films and all of Sarkar? So, like, we can name so many. There's no one film like Border, मोहरा, बलवान. आपने जैसे अभी गोपी किशन की बात की, मैं एक बात बोलूँगा. सर को भी ये बात बोली नहीं अभी तक. आवारा पागल दीवाना में जो सर का कैरेक्टर था, एक इंसिडेंट था. मैंने आई गेस ये फिल्म 15-17 ईयर्स हो गया आए हुए, तब से अभी तक मैंने शायद 100 टाइम्स ये किया होगा. क्या सर का एक सीन था, वो मिल्क लेकर आती है और पहले कहते हैं पहले तू पी. तो मेरे पास जो भी कहीं आता है ना, पता नहीं नेचुरली निकलता है पहले तू पी. बहुत बार किया है मैंने ये, मोर देन 100 टाइम्स हो गया होगा. बट वो है इम्पैक्ट है उसका, वो ह्यूमर था उस सीन में. तो लाइक आई कांट नेम ओनली वन फिल्म. सेट पे भी करते हैं चीज कि तेरा राइट कि मेरा राइट, मेरा लेफ्ट. 1, 2, 3. You have many incidents. तो एक्चुअली जब हम बच्चे थे तब मोबाइल तो थे ही नहीं, तब फोन्स नहीं थे. पर बॉर्डर देखने के बाद या फिर सर की और मूवीज देखने के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स हम प्ले करते थे. तो उसमें होता था कि यार मैं ये रोल प्ले करूंगा, ऑफ कोर्स उस टाइम पे अगर रील्स बनाते और वो सब करते तो ऑफ कोर्स आज के डेट पे वो दिखा सकते थे नहीं. तो तब ये सब नहीं था. पर बॉर्डर के हमने ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर प्ले किए और मेरा फेवरेट उसमें ऑफ कोर्स सर का कैरेक्टर प्ले करना मेरे लिए वो होता था कि नहीं ये वाला कैरेक्टर मैं प्ले करूंगा. बट इट वाज ड्रीम कम ट्रू हमारे लिए. हम कभी सोचा नहीं था. तभी मैं हमने जब ये प्रोजेक्ट डेवलप किया था दिमाग में, वी हैव थॉट ऑफ सर, इंटेंसिटी सर की वैसी है एंड व्हाट कैरेक्टर रिक्वायर्ड. तब से आई थिंक शायद तब से वो दिमाग में बैठ गया होगा और उसके बाद फिर हमें कोई और नाम सामने नहीं आएगा. जब सर को भेजी थी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, तो हम लोग जब तक सर का रिस्पांस है, हम काफी नर्वस थे कि हमें तो काम करना है. यस, इट वाज वेरी क्विक. सर ने इमीडिएटली हाँ बोला एंड वी वर लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज, शॉक्ड बोल लो आपकी. वाओ, सर के साथ सर ने हाँ बोल दिया इस प्रोजेक्ट के लिए एंड वी विल गेट अ चांस टू वर्क विद हिम. सो या इट वाज. सर व्हाई डिड यू से यस इतना जल्दी? क्योंकि काम नहीं था ना. तो एक्शन आ गया वापस. वरना हमेशा सर हॉट लुकिंग फादर और सीनियर रोमांसिंग वैसे फिल्में आ रहे थे. एंड आई वाज नॉट इनटू दैट काइंड. आई डिडंट वांट टू डू दैट काइंड ऑफ cinema because I didn't want that kind of an image. I still wanted to do something because your heroes have been Clint Eastwood, Robert Redford, Charles Bronson. So elderly guys, they have the age, they have the wrinkles, but still have that swag and that laid back attitude. किसी को देखना तो भी यार really, that kind of a thing. So I wanted that and I saw that in this character. So when he was saying Avara Pagal Divana, so it's not Yeda Anna, but he's got the madness of Yeda Anna. Yes. Yeah. The way he गाली बहुत दिया हूँ मैं इसमें, but आपको गाली नहीं लगेगी. You'll think it's a part of my language.
You know, he'll speak. It's like a Punjabi when he gives galis. You feel BC is normal. Yeah. So here also, he gets very irritated when people do unnecessary conversation. So after a while, he'll look and he's really, you know. So there are certain scenes where people will laugh at what have you said, and we're laughing, you know. And even they used to laugh when I used to say it. They used to laugh, they used to clap, they used to do all kind of things because he said, how you said it? You know, even if I've said BC, if someone says something, I'd say it in such a way, he says, you know, who the hell do you think you are? And I've said something and it wasn't in the script. But you improvised that. Yeah. I looked at him and said, and he's dying. He's on his, he's battered, bruised, and he still doesn't leave his bloody swag. ठीक है यार, ठोकना है ना. मतलब मरना भी है तो वो भी swag के साथ. Because that's his character. He has no reason to live. He has no reason to live. He doesn't want to live. So he says, you know what? I'll destroy these guys, and then I'll go. That's why Jeena yahan marna yahan. Okay. That's the relevance. I'm here, and this is it. The formula to be a superhero is 4 bags of whiskey, 5 lakh का नुकसान, एक बर्बाद जिंदगी. You know, so he's whacked up. Sexy, ना? इस डायलॉग में पूरा कैरेक्टर आ गया. And then straight, just the bloody hammer, and without looking, that first turn, and you know, okay, this guy's gone mad. And it's insane. He's fought 30, 40, 50, 60 people, but it works. Logically, it looks right. Well, it's looking super promising, and we are also missing your long hair. I do not know why did you cut that, and how long you took that to grow? It took me a year plus to grow, but my hair is long enough. The front, the back will grow. I can just. You know, आपको वो रखना चाहिए. वो वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बहुत ज़्यादा. सही वाला ज़्यादा मतलब. वैकी आपने कटवा दी, लेकिन ठीक है. वैकी ने सीधी आर्मी की फिल्म साइन करवा दी, तो उसके लिए तो अभी तो फिर भी है, यहाँ तक था, ऊपर नो है. But that has its own charm, and probably if Saregama decides to do season 2, then we will. Oh my God, that's gonna be super exciting. And on that note, thank you so much. Thank you so much for giving your time, and wish you all the best for the show. Thank you. Thank you. Thank you for the energy.